15 examples are there in in this chapter, and we have discussed first to 5 examples. Now I am asking from all of you 6 to 15. ओके 6 to 15 में जिस भी क्वेश्चन को आपको अंडरस्टैंड करनी है या फिर कहीं भी कोई क्वेरी है, so please that number you can ask. Students, do you have any query in examples? Okay, very good. Example number 8. Simply, I am explaining this example and solution. All of you do yourself. Example number 8, I am telling you. The question is, find the coordinates of the points of intersection, that is, points dividing in the 3 equal parts. So हमें क्या find करनी है? Coordinates of the point. जितने भी trisection में जितने भी आप जो divide करोगे, उसमें जितने भी points जो होंगे, उसकी coordinate हमें find. The line segment joining the points A and B. Okay. So here A and B की coordinate given है, and the coordinates find the point of trisection. Trisection का mean simply होता है कि आप किसी भी line segment को 3 equal parts में divide करोगे. Okay. जो आप 3 equal parts में divide करोगे, it means you have to take 2 points. Okay. आपने P and Q यहाँ points लिए हैं, तो आपने line segment को now AP, PQ and QB trisection में divide कर दिया. अगर ये 4 सेक्शन होंगे तो यू हैव टू डिवाइड इन 4 सेक्शन, तो आपको 3 पॉइंट्स लेने होंगे. ट्राई सेक्शन होंगे तो आपको 2 पॉइंट्स लेने होंगे. एंड इन दोनों पॉइंट की आपको क्या करनी है? कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है. सो नाउ हियर दिस P and Q dividing this line segment AB in trisection, which is AP, PQ and QB, and all these are equal. Okay, as you can see in this figure. Now we have to find out the coordinates, and we know the formula of coordinates क्या होता है. x coordinate अगर हमें find करने हैं तो m1 x2 plus y section formula mainly आपको apply करोगे आप. and for that section formula what you need mainly आपको अगर मुझे p को find करनी है तो you know that AP is equals to PB we can write. Okay, and AP is equals to PB. x1 x2 y1 x2 y2 is given, but what is not given? The another one thing, it's ratio. तो अगर मैं इसको ट्राइसेक्शन में डिवाइड करूंगी एंड AP, मुझे अगर P की कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है, देन इट विल डिवाइड. अगर ये ट्राइसेक्शन है तो ये होंगे 1, और जो दूसरी कंप्लीट होगी वो 2 होगी. इट मीन्स अगर आपको P की कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है तो जो इसकी जो रेशियो होगी वो होगी 1:2. Similarly, when we have to find out the coordinates of P by using section formula, then we will divide this ratio. I mean AQ is equals to QB you will write. And AQ क्या है आप देख सकते हो, 2 sections है तो you can write 2. इसके जो रेशियो होंगे 2:1. So it means Q की जब आप रेशियो जो लोगे वो 2:1 के रेशियो में आप लोगे, एंड जो आप P की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे then you have to take the ratio 1:2. Is this you understood, Kasis? Will you solve after this? Because that's the only concept in this question you have to understand. Okay. Now I'm asking from exercise 7.2 students. As you can see in this figure, yes, question number 3rd. I know. Question number 3rd, all of you have asked. So it is interesting question. Question number 3rd is, to conduct the sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD. You can see this is your rectangular shaped school ground. Lines have been drawn with the chalk powder, and chalk powder से line draw किए हुए हैं at a distance of 1 meter each. इसकी जो distance है that is 1 meter. Okay, so
100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter. Every 1 meter, 100 flower pots have been placed, okay, from each other along AD. So as shown, as we can show in this figure. Now Niharika runs 1 upon 4. First you can see at the second line, at the second end, Niharika runs 1 upon 4th of the distance AD. This is your AD and total AD की कितनी distance complete करती है Niharika? 1 upon 4th. And post a green flag, and here she posted a green flag. Next one is Preet. Preet, which is on 8th line, okay? So Preet runs 1 upon 5th of the distance AD. इस complete length जो आपकी AD की जो distance है, उसकी completely 1/5 part C covered the distance AD on the 8th line and posted red flag. And C posted red flag. Now she is Niharika and she is Preet. C covered 1 upon 4th part and C covered 1 upon 5th part of distance AD. What we have to find in the question, what is the distance between both the flag? हमें इन दोनों के between की distance find करनी है कि इन दोनों के between की distance कितनी होगी. If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags. अगर इनके between में रश्मि कहीं भी blue flag exactly between, okay, halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? तो हमें बताने कि इनके बिटवीन में जो रश्मि जो फ्लैग पोस्ट करती है तो उसकी जो अपनी होगी, ओके, रश्मि हैज टू आल्सो पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन देम. सो वेयर शी वुड पोस्ट हर फ्लैग, तो आपको इसकी भी बतानी है. सो इट मींस फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ दीज निहारिका एंड Preet, and after that you have to find the length, I mean completely किस distance पे रश्मि post करेगी flag को. Okay, now I hope question to understand कर रहे होंगे आप लोग सभी. How we can do this? This question number 3. Completely अगर AD, you know that this is completely 100, I mean total जो है आपके 1 meter में total 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter. So this is 100 flower pots you can take. And Niharika just at second step. So C covered 1 upon 4 distance of this AD. So अगर मुझे completely Niharika की अगर find करनी है distance. Exactly. So distance of Niharika, that is 1 upon, you know that 1 upon 4 into 100. 1 upon 4th part of this 100 total distance of AD, which is 25 we are getting. Okay. Now similarly at 8th step, Preet. This is Niharika and this is Preet. 1 upon 5th part. So distance of Preet equals to 1 upon 5 into 100. कितने find होंगे? 20. Now you say what will be the coordinate of Niharika. इसकी coordinate क्या होगी? अगर आप निहारिका का फाइंड आउट करते हो exactly, not 0 and 25, again Devashmita say this is your x-axis and this is your y-axis. Here you are getting 25 and this is your 2. So what will be the coordinate of this Niharika? Very good Devashmita. 2 and 25. And what will be the coordinate of Preet? Yes, very good Asif. 8 and second y-axis you are getting 20. Very good Aditi. So 8 and 20. Now here you have the coordinates between this of Niharika and P. What will be the distance of it? You know that you can find out easily. Now distance of directly NP. Okay. Distance NP equals to, the formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay. 8 minus 2, 6
and 20 minus 25 minus 5. Very good. So this is 36 plus 25, root 61. So root 61 units will be the distance of Niharika, between Niharika and P. जो इसके distance होगी वो कितनी होगी? root 61 units. Now you tell me, when you have to find if the Rashmi, another one girl, which has to post a blue flag exactly between them, okay, इनके between में अगर blue flag वो host करती है, then what will be the, I mean, where she should post her flag? अगर इनके between में अगर आपको find करनी है, how you can find out? You know that अगर आपको इनके between में अगर find out करनी है, this is 25 and this is 20, okay, y axis. You know that अगर आप इनके between में mid point find करते हो तो कौन सी formula आपको apply करनी है? M1 plus M2. M1 plus M2 upon M1 plus M2 upon, say, x1 plus x1 plus x plus x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. exactly. So here also you have to. Now blue flag is posted at the midpoint of this distance between the two flags. So coordinates of अगर blue flag अगर find करोगे आप तो कैसे find करोगे? इस x को पहले x1 plus x2 upon 2, okay? Coordinates of blue flag ये जो directly क्या होंगे? This 8 plus 2 upon 2, which is 10 upon 2. Yes, and next will be what? 25. 25 plus 20 कितने होंगे? 45 upon 2. So what are you are getting? What you are getting as, I mean, coordinates of blue flag. Blue flag की जो coordinates होगी वो क्या होगी? 10 upon 2, which is 5. 5 and 22.5. Okay, 5 and 22.5. But the question is asking about the blue flag will be posted in the, आपको किस line में आपको post करनी है? तो you know that 2 and 8, 2 and 8 के between में जो line होगी that is 3. Here this is 7, 4, this is 6. So in between which line, at which line she posted? Yes. So at 5th line, this another one girl, Rasmi, has posted this flag at a distance of how much? अब इन दोनों का अगर आपने जो find किया है mid point, वो क्या find किया है? 22.5. It means at 22.5 meters she will post her flag at 5th line. Now all of you got this point? Roughly I told you actually. Very good. Now tell me other question if you have from exercise 7.2. Question number 5. Okay. Question number 5, I am telling you. Find the ratio in which the line segment joining A and B is divided by the x-axis. This is the, I mean, line segment AB whose coordinates are given 1 minus 5 and B is minus 4 and 5. So find the ratio in which the line segment AB is divided by the x-axis. This AB is divided by the x-axis. So we can take any point which is divided by x-axis. तो मैंने आपको बताया था जब भी अगर x-axis से divide होती है तो आपको x लेनी है, y क्या assume करनी है? 0 assume करनी है. Okay. So now P is the point which divides this line segment at x-axis, which is x and 0. तो इसकी जो coordinate होगी वो क्या होगी? X and 0 होगी. Now here you can you have to find the ratio. So आप simply ratio को m1 and m2 भी आप ले सकते हो. So we are considering the ratio is m1 m2. Okay, let ratio be m1 is to m2. Now we have to apply here section formula. अगर मुझे x coordinate find करनी है
So formula is m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, and if we have to find y, then the formula is m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. So here x is already x, okay. तो फर्स्टली आप यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, पहले आप y को आप इक्वेट कर सकते हो. सो y इज 0 is equals to, what is your m1? m1 y2 is, this is your x2 y2, okay. This is x1 and y1. So m1 y2, m1 हमने प्लेस की, y2 is 5 plus m2 and y1 is -5, okay, upon m1 plus m2. When you will do cross multiplication here, अगर cross multiplication करते हो तो क्या होंगे, 5 m1 minus 5 m2 is equals to 0, because ये 0 से multiply होंगे तो क्या होंगे, 0 होंगे. It means now we have 5 m1 is equals to 5 m2. मुझे रेशियो बतानी है, so m1 upon m2 is equals to 5 upon 5. What we are getting as ratio, m1 m2 कितने find हुए, 1:1. So here our ratio which we have 1:1. We can place the value of this m1 m2 in this x coordinate, okay. X is here as x, you will write m1 m2. तो आप यहाँ इसकी वैल्यू प्लेस कर सकते हो 1 into what is your x2 -4, okay, plus m2 is also 1 into x1 is what, 1 upon m1 plus m2. So 1 plus 1. Now this is -4 plus 1 upon 2. What will be your answer, -3/2. So -3/2 we are getting as x. हमने x coordinate find out कर लिया. Question में पूछा है क्या, what is the ratio in which the line segment joining this. तो हमने यहाँ पर x की coordinate जो point है, I mean जो अपने point consider करे थे, उसकी coordinate भी find कर ली, -3/2 0. And what will be the ratio, जो m1 and m2 होंगे वो क्या होंगे, 1:1. तो इट मीन्स इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, एट एक्स एक्सिस, वो आपको एक्स एक्सिस पे लेनी है तो एक्स को एक्स कंसीडर करनी है, वाई को आपको 0 लेनी है, पहले आपको वाई को इक्वेट करके रेशियो फाइंड आउट करनी है, एंड इसकी वैल्यू को आपको एक्स में को प्लेस करनी है. इफ it will, I mean it is divided by y axis, then we have to take x is 0 and it will be y. So हमें x को इक्वेट करनी होगी, उससे हमें रेशियो फाइंड आउट करनी होगी, एंड देन उसकी वैल्यू हमें y में प्लेस करनी है, so that you can find out the coordinates also. Is this you understood all of you? Question number 5. Ma'am, repeat again. Okay, again I'm telling you very I mean mainly question में पूछा है, find the ratio in which the line segment, पहले ratio बतानी है, in which the line segment joining the A and B is divided by x-axis. So a point which is dividing this line segment AB, okay, at some ratio, and that ratio is unknown. So हमें इस ratio को find out करने थे. Okay, so it is divided by x-axis. तो जब भी आपको क्वेश्चन में बोला होगा अगर x-axis के थ्रू डिवाइड करनी है तो आपको क्या करनी है, x को x कंसीडर करने हैं, y जो दूसरी कोऑर्डिनेट y एक्सिस होती है उसको 0 कंसीडर करने हैं, बिकॉज y इज नॉट गिवन, हमें x एक्सिस पे बतानी है, बिकॉज x एक्सिस इज डिवाइडिंग दिस लाइन सेगमेंट. सो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन. हमें इसकी कोऑर्डिनेट भी फाइंड करनी है इंक्लूडिंग दिस रेशियो. तो हमने पहले क्या करा, हमने रेशियो पहले कंसीडर किया, लेट द रेशियो बी m1 and m1 is to m2. Now as we know the section formula, because ये अगर किसी रेशियो में डिवाइड होते हैं तो आपको सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई करनी है. So this is x coordinate, this is y coordinate. हमने क्या किया,
x कोऑर्डिनेट यहाँ पे तो दो आपकी चीजें अननोन होगी, x इज आल्सो अननोन एंड m1 m2 इज आल्सो अननोन। सो अगर हम इसको इक्वेट भी करेंगे तो हमारे पास कुछ फाइंड आउट नहीं होगा। तो हमें क्या करनी है, पहले y को इक्वेट करनी है, बिकॉज हियर ओनली m1 एंड m2 वी कैन फाइंड आउट, बिकॉज y की वैल्यू 0 दी हुई है। तो हमने y की वैल्यू 0 कंसीडर की, हमने इसको इसकी सारी वैल्यू प्लेस की, इसकी हेल्प से हमने क्या किया, y को इक्वेट कर कर हमने m1 m2 रेशियो फाइंड आउट करनी। जो हमने रेशियो फाइंड आउट कर ली है, तो इस रेशियो की जो वैल्यू है, फर्स्ट हमने रेशियो ही पूछा था, तो इस रेशियो की वैल्यू को x कोऑर्डिनेट में प्लेस किया, जिससे हमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। क्वेश्चन में पूछा है m1 m2 रेशियो क्या होंगे, so m1 m2 1:1 and coordinates of p, I mean coordinates of point of division, so this is the point of division। so इसकी आंसर क्या होंगे, तो हमने अभी जस्ट बताया इट इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, x एक्सिस तो हमने x की वैल्यू तो फाइंड कर ली है, सो -3/2 एंड y तो 0 ही है आपके, तो 0 हो जाएंगे। सो दिस इज योर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन एंड दिस इज योर रेशियो। ओके, ऑल ऑफ यू गॉट द आंसर? should I ask some questions, same question from you? Very good, Prithvi. Now I am asking from you. Here, y-axis A and B, coordinates of A and B is given same 1 and 5, and this is your -4 and 5. Okay, this is your point of division. The question is you have to find ratio and coordinates of point of division P. Okay, so it is divided by y-axis now, not by x-axis. Now, so tell me what will be the ratio and what will be your coordinates of P? I'm giving you 2 minutes for it. All of you do it in your notebook so that I can understand you understood all the concept of this question number 5. I have changed this question number 5 in place of x-axis only. I am telling you y-axis, okay? So this is divided by the line segment by y-axis. Tell me what will be the required ratio and what will be the coordinate of P? Okay, so all of you are what are you are getting as y, you know that 0 and y you have to take. Kassis is saying y equals to 1. It means जो इसकी coordinate होगी वो क्या होगी, 0 and 1 according to Kassis. Okay, what will be the ratio, Kassis? All of you got the same answer? क्या आपके भी y की वैल्यू 0 आ रहा है, सॉरी 1 आ रहा है? Devashmita is also getting 1. Okay, Devashmita is getting 1. Fine. Say Divash, Aryan, Sapna, Riya, Ragni, Asif. Okay, very good. So it means y is equals to 1. जिसके भी y के आंसर 1 आ रहे हैं, it is right. Say now Riya and Devasmita, what will be the ratio? आपने रेशियो क्या फाइंड आउट किया? Because there are two questions.
You have to say here ratio as well as the coordinate of P. Yes, students, tell me, why are you not replying? This is so simple question only. I think ये 2 mark के question है. Very good, Devashmita. Your ratio will be 1:1. जो ratio अभी हमने जो find out की इसमें भी same ही ratio होगी. And coordinates of P will be 0, y. So आपके जो आंसर होंगे y के अगर आंसर 1 आ रहा है तो आपके आंसर होंगे 0 और 1. Very good. Now tell me other question if you have from the same exercise. Please see your book. Is there any other question? I am showing you. Yeah, there are total 10 questions. Now you can see. Is there any question apart from this 5 and 3rd? Okay, if you are saying no, then I can ask from all of you. फाइन, अगर नहीं आपके पास है तो 7 चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेरी, ओके वेरी गुड, जितने भी क्वेश्चन अगर आते हैं एमसीक्यू में इन योर पेपर PT2, so please there also you do your best. Okay students, what I am telling you from exercise 7.2, okay, अगर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप आस्क कर सकते हो, अगर नहीं है तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ. नाउ आई एम आस्किंग फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 11 to 15. Yes students, tell me. एग्जाम्पल नंबर 11 to 15, किसी को कोई डाउट है? Because here we have to apply area of triangle, okay, when the coordinates of 3 vertices are given. बेसिकली अगर आप देखोगे इसमें मेनली आपको इस एग्जांपल को कंसीडर करनी है, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है. एग्जांपल नंबर 11, 12 एंड 13, इन सब में आपको सिर्फ एरियाज फाइंड करने थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल. एंड वी नो दैट द फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. So that's the formula you have to apply for finding area of triangle. Okay. Another one question is find the value of k. यहाँ आपको k की value find करनी है. Okay. When the 3 vertices of triangle are given. तो ये आपको ध्यान में रखनी है. And one more thing, k की वैल्यू तो फाइंड करोगे आप, बट अगर मैं सपोज क्वेश्चन में 3 वर्टिसेस गिवन होते हैं एंड k की जब भी वैल्यू फाइंड करनी होती है, सो सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे. अगर पॉइंट्स आपके कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय देम इज ऑलवेज 0. ओके, तो आप जो एरिया ऑफ ट्रायंगल कंसीडर करोगे वो क्या होंगे, 0 होंगे. अगेन आई एम टेलिंग यू, व्हेन द पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल are, 3 vertices are collinear, then the area of triangle formed by them must be 0. ये आपको लर्न रखनी है. And with the help of it, you can find out the value of k. Now in exercise 7.3, these are the 5 questions. Do you have any query from this exercise? Yes or no? Otherwise, I will ask some questions from you. Students, if you are getting my voice, I am asking exercise 7.3 में किसी को डाउट है?
किसी भी क्वेश्चन को समझने में? Question number 3. Devashmita, no. Very good, Devashmita. And see, students, tomorrow I'll take your test of 7 chapter. So be please all of you prepared. You all of you will prepare of this chapter properly करोगे. And this question number 3 I'm telling you. Okay. Cues आपकी exercise or chapter से related question. Or telling you find the area of midpoint of the side of the triangle whose vertices are this. Find the ratio of area of triangle, area of the given triangle. So आपको बतानी है find the ratio of this area to area of its given triangle. So find the area of triangle formed by joining the midpoint of the side. So it means क्या करने हैं आपको? Simply question number 3. You have to take a triangle and coordinates of these 3 vertices are given, which is 0, -1, second is 2 and 1, and third is 0 and 3. The question is asking about find the area of triangle formed by joining the midpoints. अभी आपको क्या करनी है? इसकी midpoint लेनी है. So now we are considering D, E, F be the midpoints of this given triangle ABC. Okay. You know that here you have to find the area of triangle formed by joining the midpoint side of the triangle. So पहले आपको DEF area of triangle DEF इसकी एरिया फाइंड आउट करनी है. ओके इसके आंसर बताओगे. एंड तो अगर आप DEF की अगर एरिया बताओगे तो हाउ विल यू फाइंड? यहाँ पे तो इसके वर्टिसेस नहीं है, तो पहले आपको इसकी वर्टिसेस फाइंड करनी होगी. ओके सॉरी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करनी होगी ऑफ दीज 3 वर्टिसेस DEF. सो अगर मैं D का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूंगी तो वी नो दैट द फॉर्मूला मुझे को अगर बिकॉज सिंस दिस D is the midpoint of AB, so here we will apply for finding the coordinates midpoint formula. This is x1, x2. Okay, so x1 plus x2 upon 2 you will do. 2 plus 0 upon 2 करोगे तो क्या होंगे? 1. 1 plus -1 upon 0 is? Yes, exactly, Kassis. Now tell me, what will be the coordinates of D? Coordinates of D क्या होंगे? Tell me. 1 minus 1, that is 0 upon 2. तो ये आपके 0 हो जाएंगे. Similarly, E का भी coordinate आप find करोगे. 0 plus 0 upon 2, 0. Minus 1 plus 3 upon 2, that is? 1, 2. No, again I'm telling you, A